this video is on managerial economics MCO-21. Now you can say this as a last minute suggestions or the last minute revision that you can do. So both you can do. Let's see a few important topics from this particular subject. And सबसे पहले देखते हैं कि what are the important contents or chapters you have. Now, these are all 13 units you have to study for this exam. And as far as my suggestions goes, you should revise this second chapter, the firm and stakeholders, the third chapter, basic concepts and techniques. You should pay more attention to long run cost analysis, market structure and barriers to entry, pricing under perfect competition and monopoly, and pricing under monopolistic and oligopolistic competition, and lastly pricing strategies. That means the second part of this subject is what appears to be more important. Okay, so let's see few important topics straight away from unit 1. Now from unit 1, these three topics you can revise for the exams. I mean, you should concentrate more on this. I don't say कि you just leave out everything. I don't mean that, but you should pay more attention, more focus to these three topics: nature of managerial economics, the second one, the central problems of an economy, and thirdly, economic analysis. These three appears to be more important, and you can get one questions from here. From unit 2, you can revise this one, objectives of a firm. Basically the first two, profit maximization and value maximization. These are very common for the exams. Then you have short notes which you can get from this chapter. It is I'm quite sure you will get one from here. So this is like the first one, the incremental concept. The second one, the equi-marginal principle. The third one is the opportunity cost principle, PPC, that is production possibility curve, its schedule, its graph and everything. And lastly, the invisible hand by Adam Smith. So these are all important short notes from unit 2. Let's talk about unit 3. Unit 3, you should revise this one, the difference between variables and constants. Okay, and one more question you can revise from here, that is techniques involved in decision making under risk and uncertainty. This is also very common question, as I have analyzed the last 10 years question paper. Previously this subject was in management program, तो वहाँ से मैंने इसके जो क्वेश्चंस देखे हैं नाउ अभी ये MCOM में ऐड हुआ है, तो न्यूली एडेड सब्जेक्ट, तो ये आप कर सकते हैं. यूनिट 4 से डिमांड कॉन्सेप्ट और एनालिसिस के ऊपर है. यहाँ से डिमांड फंक्शन और इसके मेन वेरिएबल्स और ये डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी. हालांकि ये दोनों कॉन्सेप्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. It is almost same and both the questions carry equal weightage. So do revise this. From unit 5, demand elasticity, you can get some sort of short note, that is arc price elasticity. Then like what is the application of price elasticity in making management decisions. You can get a short note on income elasticity of demand and cross price elasticity. So these questions are important. Okay. Unit 6, demand estimation and forecasting. तो as we know कि यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक पे आपको ध्यान देना है. दो टेक्निक्स हैं, सर्वे मेथड एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स. तो ये दोनों टेक्निक्स दोनों मेथड्स के अगेन देयर आर सब मेथड्स आर देयर, लाइक सर्वे मेथड के मार्केट रिसर्च, सेल्स फोर्स ओपिनियन एंड डेल्फी मेथड. इसके अंदर डेल्फी मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स अगेन 3 टाइप के होते हैं. वन इज टाइम सीरीज, द अदर इज बैरोमेट्रिक फोरकास्टिंग एंड इकोनोमेट्रिक फोरकास्टिंग. तो इसके अंदर यहाँ पे टाइम सीरीज इज मोर इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स यू गेट इन शॉर्ट नोट्स ऑल्सो. यूनिट 7 की बात करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन. इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके बिना इकोनॉमिक्स बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स अपीयर्स यूजलेस.
एंड इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनेजरियल यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, दिस क्वेश्चन यू कैन गेट, and you can get one difference between economic efficiency and technical efficiency. This question also appeared quite a lot of times. And उसके बाद में एक और difference है, that is short run production function and long run production function. So this is also important one. You can also revise this because this is the most important law of economics, laws of variable proportion, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी बोलते हैं. इसके शेड्यूल, इसके ग्राफ एंड इसके तीनों स्टेजेस, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वी हैव स्टडीड इन क्लास 11 12 एंड इन फैक्ट इन कॉलेज ऑल्सो अबाउट दिस लॉ, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं. ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 8, शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस. तो यहाँ से ये कुछ डिफरेंसेस आप कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. कुछ और डिफरेंसेस हैं इस चैप्टर में, जैसे अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट. तो ये 3-4 डिफरेंसेस आप कर सकते हैं. एंड यू कैन गेट वन लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, जिसमें आपको टीएफसी, टीवीसी, टीसीएएफसी, एवीसी, इन सब के बारे में आपको विद डायग्राम एंड शेड्यूल आपको एक्सप्लेन करना है. यूनिट 9 में करना है आपको अगेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, again a very important one. And you can also get this economies of scale and the different types of economies. लेकिन आई विल रैदर से कि आप डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाएँ. दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल. देन वी हैव अगेन ए शॉर्ट नोट ऑन लर्निंग कर्व. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी कॉमन क्वेश्चन. एंड अगेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, जैसे कि प्लांट साइज, आउटपुट लेवल, प्राइस ऑफ द इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स, दैन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर. एंड अगेन लाइक मैनेजरियल यूजेस ऑफ कॉस्ट फंक्शन, दिस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. यूनिट 10, मार्केट स्ट्रक्चर एंड बैरियर्स टू एंट्री. यहाँ पे स्ट्रेट अवे यू कैन रिवाइज दिस क्वेश्चन, बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द मार्केट, हाउ यू विल क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, ऑन व्हाट बेसिस यू विल डिवाइड. तो ये 4 बेसिस आपके सिलेबस में है, दैट इज द नंबर एंड साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सेलर्स, द नंबर ऑफ बायर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कंडीशंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी जनरली एनालाइज दिस 4 थिंग्स. देन कम्स बैरियर ऑफ एंट्री, कि कोई भी अगर सेलर अगर मार्केट में एंटर करता है तो कैसे टाइप के बैरियर्स उसको फेस करने होते हैं, ऑब्स्टेकल्स. यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं 6 ऑब्स्टेकल्स, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल बैरियर, उसके बाद में लीगल बैरियर्स, स्ट्रेटेजिक बैरियर्स, बिल्डिंग एक्सेस कैपेसिटी. तो लाइक दैट ये 6 बैरियर्स हैं एंड इनको एक्सप्लेन करना है. जस्ट लीव द पॉइंट्स. Always in the exams try to expand the point. The more you write, the more you get. Then you can revise this one also. What is law of supply? इसका schedule, इसका graph and the factors that affect the supply curve. From unit 11, that is from pricing under perfect competition and pure monopoly. तो यहाँ पे 2 मार्केट हैं, एक तो परफेक्ट कंपटीशन है, दूसरा मोनोपोली है. दोनों के ही आपको लर्न करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों परफेक्ट कंपटीशन की एंड प्योर मोनोपोली, दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है. एंड उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो कंडीशंस हैं ग्राफ्स के साथ, तो दैट यू नीड टू रिवाइज. जैसे कि ये शॉर्ट रन में अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये ग्राफ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन द लॉन्ग रन, इसका भी ग्राफ है जो आपको करना चाहिए. देन अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, एंड अगेन इसके भी ग्राफ्स हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, जैसे कि ये ग्राफ, दिस इज़ फॉर मोनोपोली, तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए. देन वी हैव द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 12. यहाँ पे है अगेन देर आर 2 मार्केट्स, वन इज़ मोनोपोलिस्टिक, द अदर इज़ ऑलिगोपोलिस्टिक. तो अगेन ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनके भी अगेन लाइक प्राइसिंग डिसीजंस अंडर मोनोपोलिस्टिक इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, क्योंकि इसके 2 टाइप्स हैं.
और दोनों को ही आपको ग्राफ के साथ में, ये ग्राफ को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ समझ गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगेन फॉर ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसकी भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं आप। And again you can get one like these two for short notes: king demand curve and cartel profit maximization. Both these concepts are very very important. And what difference you can also learn, that is monopolistic competition and oligopoly. Okay, लास्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 13, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपको लर्न करना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, एंड इन तीनों के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी दे देता है इसको, कोई भी एक। अगेन यू कैन गेट वन शॉर्ट नोट ऑन पीक लोड प्राइसिंग एंड बंडलिंग। बंडलिंग थोड़ा सा लंबा है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंडलिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बंडलिंग, तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं इस यूनिट 13 से। So friends, these are few important last minute suggestions for this December TE for MCO 21 managerial economics. I hope you will be in a better position after watching this video and can perform well in the exams. Best of luck for the exam.